Good morning, dear students. Okay. Good morning, dear students. Am I audible? Dear students, am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. So good morning, all of you. Thank you, sir. Okay, Nasrin. We'll start the class very soon. Okay. Just 1 second. मैं क्लास जाऊंगा. Is the screen visible to all of you? सर मैं क्लास जाऊंगा. नहीं सुनाई दे रहा है? क्लास जाऊंगा. Please be muted. Please be muted, dear students. Those who are having their audio on, kindly mute yourself. सर मैं I'm requesting. Thank you. So very soon, very quickly, I'm going to start the class, and as you can see in the slide, this is. Okay, so I have to stop my screen. Just a second. Screen का on ही देखिए. Like, dear students, I'm requesting all of you kindly have some patience. We're going to start the class very soon. I cannot annotate in this slide. Just give me some. Just give me some time. We'll quickly start this class. Now I guess it is visible to all of you. And welcome to DHSC sponsored online academic support program. I am Devasis sir, and today I am going to discuss about the topic that is microbes in human welfare. So is it audible to all of you? Done. Okay, you can tell me in the chat box wherever you have any problem or wherever you have any doubt, you just tell me in the chat box. Okay. So good morning once again to all of you. Our topic, the very chapter we are discussing till now is about microbes in human welfare.
In the very first two class, we have discussed like how the tiny microorganisms help us to know the human value of the human life केमती कौन problem सब हेतला human life से केमती को हमें tackle करथले microbes रो help नहीं की. First of all, microorganisms are very tiny organisms, very little organisms, and they are not visible to our naked eye. Yes or no? So we can only see them in the help by the help of a microscope. Then our microscope रे हम तांको देखि पारुथिले बहुत छोटा छोटा organism माने थिले तांको देखिया पई कि हमको यूज करियो पड़सला different kind of microscopes. ଆଉ ଏ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟି ଅଛି ତାର ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାର କଣ କଣ ରୋଲ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ already there are two classes have been done regarding this topic ଆଉ ଆର କଣ କଣ କାମ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି. ଆଜିର ଟପିକ ର ନାଁ ହଉଛି the role of microbes in sewage treatment. So we'll quickly jump into that topic. So dear students, ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗକୁ AHSC exam ହବାକୁ ଯାଉଛି 2026 ରେ going to appear for the annual higher secondary education annual higher secondary examination. ଆଉ ସେ ଯୋଉ board exam ରେ ତମକୁ ଏଇ chapter ରୁ କିଛି 2 mark question ଆସିବ ଆଉ 1 mark question ଆସିବ, nothing else. No long questions are going to be asked from this chapter. You are going to be asked about the 2 mark questions or 2.5 difference between all the 1 mark question, 8 mark question ଆସିବ. So we have segregated the chapter into 6 different parts. One is the microbes in household product. Second is microbes in industrial product. Then third is microbes in sewage treatment. Fourth is microbes in biogas production. Fifth is microbes as biocontrol agent. And the last one is microbes as biofertilizers. So till now we have completed the first two. One that is microbes in household products and second one is microbes in industrial products. ये जो household product हमें देखुतले household product रे हमें देखले कौन how these tiny microbes, how these tiny microorganisms, they are helping us in the formation of curd, in the formation of cheese, in the formation of bread, etc. जोटा को हमें घरे household product रे तैयारी कर पारुचे. हमें yeast को यूज करके डो बनाउचे, fermentation करूचे, जो batter formation करूचे हमें तो सब जिंस household product रे केमते यूज होतला से विषय हमें देखितले. In the microbes in industrial product, industrial approach रे हमें कौन देखिले ना industrial approach रे हमें देखिले पिला बने कि how these things are helping us in providing us the as a part हमको सेटा provide करथिले help करथिले केमिति हमें ताको नेके alcohol production कर परथिले इन lab scale नो land scale को गले pilot scale को गले सेटी गोटे large amount रे how we are preparing the alcohol like ethanol, like the whiskey, vodka, brandy, rum, etc. by helping by using these microorganisms. ତା ସହିତ ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆଇଡିଆ ପାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ମାନେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିକି. ଦେନ୍ ତାର ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଣ ରୋଲ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କଣ ବାୟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ କି जो स्ट्रेप्टोकाइनेज ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ବା ଆମେ ଯୋଉ statins ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କୋଉ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ବନେଇଛି ଆଉ ତାର କଣ କଣ ରୋଲ ରହିଛି. We have thoroughly discussed all those things in the previous classes. Then so I hope ତମର ଏଇ chapter ଏଇ part ରେ କିଛି doubt ନଥିବ. If you have any doubt in this part you can ask me in the chat box. Today we are going to deal with the first 3 and 4 number of classes. The third part is about microbes in sewage treatment and the fourth part is about microbes in biogas production. So I request all of you to stay till end of this class because we are going to have a question answer round and where I'll share with you the previous year questions from the NEET entrance examination like 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 upwards. कौन question आसीची और कौन question हेई परिबो ए part. तो जो मैंने स्टार्टिंग रो एंड जाए कि रहिबो से माने देखि परिबो कि तमे जहा जहा पढिला क्लास रे सेही रिगार्डिंग क्वेश्चन पचरा हबो तमर नीट एंट्रेंस रे एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन thoroughly. Clear? So without wasting any more time, we quickly jump into the part that is the role of microbes in sewage treatment. So as you can see in the slide तमन स्क्रीन रे हम देखि परछबो कि एठी गोटे प्लांट टी तमु देखा जाय छै प्लांट इन द सेंस कि गोटे बडो इंडस्ट्रियल एरिया टाइप रो आ एठी हम कोन करछ ना सीवेज को ट्रीटमेंट करछ. The very basics about this slide is what do we mean by sewage? Sewage रो माने कोन हम ताको नेले कोन बुझे. तो बेसिकली पिला माने सीवेज होची कोन ना सीवेज होची म्युनिसिपल वेस्ट, the waste water produced in the house. ଆମ ଘର ମାନଙ୍କର ବାଥରୁମ ରୁ ୱାଶରୁମ ରୁ କିଚେନ ରୁ
जो सब अबिका असना पानी भरची जो वेस्ट वाटर जोटा हम बाहर की पकाउचे तो सब जाएंगे कोठी जमा होची कोठी रो बसची ना म्युनिसिपालिटी वाटर बसची से जो म्युनिसिपालिटी वेस्ट वाटर सब अच्छी से कलेक्शन है कि जाई कोठी मिसिया कथा म्युनिसिपालिटी जाऊ नहीं कि नई बा नाଳ बा ई सब जगह नहीं पकाउ तो से जो वेस्ट वाटर को डायरेक्टली यदि हमें नहीं पकई दउछे को जगह ना हम डायरेक्टली नहीं तो तक हमें नॉर्मल रिवर बॉडी रे नहीं तक अटैच कर दउछे छाड़ दउछे तो आगे कौन होची ना से रिवर रे बहुत सारा चांसेस होची कि प्रॉब्लम हो तो आमको से प्रॉब्लम रे बचे पाई भी हेले आमको से सीवेज को ट्रीटमेंट करके पकेउ पड़ियो तो सीवेज जो हमें क्रिएट करी हम घर मान करे हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो सीवेज सब बाहर से घर रे सेही सब हाउस होल्ड सीवेज मन को केमिति हम ताको ट्रीटमेंट करके ताको लेस पोल्यूटेंट करके ताको हम रिवर बॉडी को छाड़ी दो दैट शुड बी अ रोल ऑफ एवरी सिटीजन एंड हम गवर्नमेंट ता विषय कोन काम करूची और साइंस सेठी केमिति हेल्प करूची एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल्स सो आई होप तुम मैंने जाएंगे टॉपिक रो ना बुझी पारथिबो टॉपिक रो ना होचे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट तो सीवेज ट्रीटमेंट रे माइक्रोब्स माने केमिति रोल करछने ताकर कोन कोन एक्टिविटी अछि वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन डिटेल एंड तमरो एचएससी एग्जाम जो हवा को जाउची काउंसिल रो जो एग्जाम हवा को जाउची 2026 रे ता पय भी रेडी थाओ काहे कि ना एच रो क्वेश्चन आस परिबो तमरो सीवेज ट्रीटमेंट रे राइट अ शॉर्ट नोट और यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट differentiate पकई परियो one more question पकई परियो what is GAP what is YAP what is Ganga action plan what is Yamuna action plan so you need to remember all those things out the important two more question is after that परियो a topic ras परियो ज ना होची BOD और biochemical oxygen demand तो ये जहाँ जहाँ सब क्वेश्चन नाम हूँ तुम मानो कहले लाइक BOD लाइक सीवेज ट्रीटमेंट लाइक STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स and like primary sewage treatment, secondary sewage treatment. ठीक है जी. What is biofloc? तो what is sludge digester? What are fermentators? तो जहाँ जहाँ जिन सब नाम तो मन कहूची एई ना गुड़ा को भलसे मन रखिथाओ काहे कि ना एई जिंस तमर आगको एग्जाम रे आसीबार संभावना रहूची ता बाद रे आफ्टर हैविंग दिस क्लास ए क्लास होला परे त माने एबे हे पे जीवो क्वेश्चन आंसर दवा पई कि नीट एंट्रेंस रे एलिजिबल हे परिबा अप्लाई करबा पई ओके. So as you can see over here, sewage is basically a municipal wastewater contains large amount of organic matter in this. ऐसा ना आपका कितना बहुत amount रे कौन है organic matter present करते हैं. Organic matter कल तो मैंने बुझी पड़चो those matter having carbon, hydrogen, and oxygen. Basically आमे जोटा waste product है सब छाड़ू ची तो basically organic matter माने ही था. The sewage municipal wastewater contains large amount of organic matter and the sewage is treated in sewage treatment plant to make it less polluting. Then before doing anything, let us learn the why. Why we are going to do this. When our why will be clear, then our how will be easy. Yes or no? Remember this line. When our why is clear, like why I am going to do this, then our how will be easy or we can manage how to do it. Yeah, then the path kahinki padhibi. Kahinki more clear achi. Why should I join this online academic support program class? कौन पाएंगे join करेंगे? Because I need to do better in my exams. I need to do better in my career. हाँ कि नहीं? तो बाकी माना को तो rest माना को तो अलगा है कि मतलब मैं career में भला करने के लिए I need to be more conscious. When my why is clear, then my how will be easy. Like केमिति process टी करीबी कौन मैं support नहीं करीबी teacher माना को तो कौन guidance नहीं करीबी ठीक से बोला जिनिस why should you clear all these wastewater हमें से wastewater काहे की treatment करिया कौन ପାଇଁ treatment करिया तो पिला माने मन रखिबो एठी जो वेस्ट वाटर बाहरिची जेबे ये डायरेक्टली जाई के हमर नई रे मिसिबो वाटर बॉडी रे मिसिबो सेते पोल्यूशन रा बहुत बड़ ब्लूम हो करियो देन आ सहज रे हम देखु जे कि धीरे धीरे हमर एनवायरनमेंट रे केते प्रकार चेंजेस आसुची आ सबुट बड़ हर्डल ही होचे आमी माने विद द ह्यूमन बीइंग्स आमी माने ए जो एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन ये सबुरा मेजर कंट्रीब्यूटर आमे ही होचे जहां भी किसी पॉल्यूशन होची नेचुरल कॉज बहुत नेग्लिजिबल रहिले एंथ्रोपोजेनिक कॉज बहुत बड़ा रहउची माने से एंथ्रोपोजेनिक मींस मैन मेड ये जहां भी किसी डिजास्टर होची सब मैन मेड डिजास्टर ही तार बड़ कारण सब रहउची रिसेंटली तमे देखिथिबो मु टॉपिक रो टिके डेविएट ही तमु कहूची रिसेंटली तमे देखिथिबो ए जो हमर उत्तराखंड रे गोटे जागा रे क्लाउड बस्टिंग हैला क्लाउड बस्टिंग हे गोटे गां बसई दे गला से देन सेटे जो जगह रे जो क्लाउड बस्टिंग हेची
बट किसी समय पाई कि जो हेवी रेनफॉल ହେଇଛି से हेवी रेनफॉल सकाय जो अबिका डिवास्टेशन से जगह सब ହେଇଛି ता ପାଇଁ कि आम ही कोठा कोठ रेस्पोंसिबल आमे से जगह रे इलीगली कंस्ट्रक्शन करिछे कंस्ट्रक्शन रिवर रो फ्लो को अटके कि ता जगह आमे घर करछे जोटा कि बहुत बड़ा असुविधा होଉଛି तो ठीक से बड़ा जिंस ए जो वाटर पोल्यूशन हबो तो वाटर पोल्यूशन हबो तो अल्टीमेटली से जो वाटर रे एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो होछि the aquatic environment रे जो aquatic organism माने अछंती like the small fish the large fish and many more microbes are there many more algae are there plants are there तो ସେମାନେ ସମସ୍ତେ pollutant है जब ସେମାନେ pollute हेबे तांको बॉडी से जो waste product सब रहिला सिया हम पाखକୁ food chain रे रिटर्न करके आसीबो then it will carry some more vulnerable diseases बहुत सारा भयंकर बीमारी को लेके आसीबो हम पाखକୁ disease को सब carry करके आने so ultimately, by doing this sewage treatment plant, by reducing the pollution level of this sewage, is basically beneficial to us only. Indirectly, हमको ही से benefit करेगा. And human तो बिना benefit रे कोई भी काम करेंगे. तेरा तो मैं why इटू clear है जब कहीं की हमें sewage को treatment करेगा, तो sewage को हमें treatment करोगे, तो the pollution level जो बढ़े की रहेगा, तो pollution level सकाशे ultimately we the human being are going to pay the value. से जो जहाँ भी किसी असना हबो जहाँ भी किसी सेटो नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट हबो से प्रॉब्लम को अल्टीमेटली हमको ही फेस करियो पड़िबो so we need to be more cautious in doing all those things so basically sewage you all know what is sewage sewage is the municipal wastewater and it contains a large amount of organic matter आपका जब बहुत सारा organic matter भरी भरी करछ and the sewage is treated in sewage treatment plant to make it less pollutant तब हमें less pollutant करता हमें completely तक भलो करि परिबा नहीं but we can ता ପାଇଁ अलगा बाट अछि टर्शियरी सॉल्यूशन तमे देखि परिबा अबिका प्राइमरी सेकेंडरी जाके हमें फोकस करिबा टर्शियरी और क्वाटरनरी जदी अछि आगु सेटा तमे परे हायर क्लासेस रे जानो तो आज रो टॉपिक रे हमें देखिबा कि जो सीवेज ट्रीटमेंट नो केटा स्टेज रे हमें तो क्लियर कर परछे वन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकंड इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्राइमरी सेकेंडरी यू ऑल नो बट गुटे जिनसे ध्यान दे देखिबो मार्क करि परिबो कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिखिछि जस्ट तार तले लिखिछि कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ता माने हम जो माइक्रोब्स माने को विषय पढुछि वी आर सेइंग अबाउट दैट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर and these microorganisms are tiny but they are living beings they are living beings yes or no they belong to kingdom monera kingdom protista but they are living beings और ये जो living beings माने अछंती से जो ସେମାନେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରେ ଦେଖିବା तो क्वेश्चन एटू क्लियर हो जाओ कि प्राइमरी ट्रीटमेंट रे हमरो किछि भी रोल रहउनी माइक्रोब्स मानकर व्हेन इट कम्स टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेठी हमें माइक्रोब्स मानकर रोल नउचे तांकर हम हेल्प नउचे तो क्लियर ये स्लाइड देखि तम बुझि परथिबो आ ई जो पीपीटी तम पिक्चर देखा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंडिया एमति किछि कि जगह रे जिंसो इनिशिएट हेलानी लाइक इन केस ऑफ मेजर मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली एंड बेंगलोर आ नहल तो बाहर कंट्रीज मानकर सब जिंसो बहुत आगुरु हेई आसीछि now coming to the primary treatment you can see here that it is the physical removal of the sewage ठीक है पॉल्यूटेंट माने जो अछि ताको फिजिकली रिमूव करछे तो माने निमोनिक्स रे मन रखि परिबो P फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट P फॉर फिजिकल रिमूवल P रे खड़ सरी गला P रे प्राइमरी ट्रीटमेंट हमें करूछे आ से P रे हमें फिजिकली रिमूव करूछे फिजिकली कहा को हटोछे ना फिजिकली जो सब वेस्ट पार्टिकल्स अछन जो से लार्ज पार्टिकल्स अछन ताको हमें सफा करछे it includes removal of floating debris by sequential filtration तम पिला माने मार्क करथिबो घरे हमर जो हाउस होल्ड रे मामा जेबे दही को गोळी की सर को गोळी की जो लहुणी बनाते देन जो लहुणी बनला बेले देखि जो कोन हेतो बिना हेड कोन सेडिमेंटेशन प्रोसेस चलतिबो फेंटा होतिबो फिल्ट्रेशन चलतिबो सेठी तो लहुणी माने डेब्रिस है कि खंड 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 पार्ट जो भासुथिबे दही ऊपर हमें आइस पकई देल से माने आहुरी कोआगुलेट हे जिवो ताकू जे हम सेपरेट करूचे घियो भा करिया पे कि यू नो घियो तयारी होची कोटो लहुणी तयारी होची जो बटर तयारी होची घियो तयारी होची लहुणी पार्ट रे तयारी होची तो सेही पार्ट रे करिया पे जेम सेटी भासमान अवस्था रे थांती फ्लोटिंग डेब्रिस एटी सेमती बहुत सारा अलिया आबर्जना जिनिस जो ऊपर भासुचंदी लाइक द जो पॉलिथिन से गला कि तमे गोटे रास्ता कोड साइड रे किछि खाइलो गुपचुप खाइलो कि दही बड़ा खाइलो जो प्लेट में संग संग पकई दोछि नै कि कोठी म्युनिसिपल नळा रे पकई दोछि बा से जगह रे पकई दोछि से माने ब्लॉक करि के रखो जगह का तो प्रथम काम हैला कि हम फिजिकल रिमूव करिया पड़िबो जहां जहां जिंसो सेठी ब्लॉकेज करूछि जो जो पार्ट सेठी रहिबि ताकू खराब करूछि हरान करूछि से पार्ट को हम काढिया पड़िबो
और तमे प्राय तो जिनसे देखिथिबो म्युनिसिपालिटी मानकरे एमती टाइम टू टाइम वर्षा दिन आसिला पूर्वरु ये वाटर लॉजिंग कंडीशन न हो से पई कि ताको सब सफा करा जाए सब जाक जो वेस्टेज को सेटू कढा जाए फिजिकल रिमूव करा जाए बड़ा बड़ा बाउंस रे कोडी बड़ा सब्सटेंस हेतिबो एंड सेठी जो लोक माने सेठी पसिली फिजिकल ताको रिमूव करी बाहर को पकांते तो ये गला प्राइमरी ट्रीटमेंट रे हमें कोन करछि ना फिजिकल रिमूवल एति तम मन रखिबे सेकंड रिमूवल ऑफ द ग्रिट ये जो ग्रिट वर्ड टा यूजुअली ग्रिट र माने होछि सॉइल्स एंड द स्मॉल पेबल तो छोट छोट गोड़ी बाली जो ग्रिट हे गला ताको हमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर पाई व्हाट इज सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन माने होछि कोन सपोज ये बोतल रे गोलिया पानी अछि कैन यू सी दिस बॉटल यस ए बॉटल रे किसी गोलिया पानी अछि ताको हम विगरसली सेक कर सला परे जदि हम ताको स्टेबल रखि दबा तो से कोन बने जो हायर डेंसिटी पार्टिकल्स माने अछंती जे धीरे धीरे सब कोन हे जो सेटल डाउन हे जिवे जस्ट अ सेकंड हां जते बडा हमें सी जो स्टूडेंट्स जते बडा हम कहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस रो नाम कहली सेठी कोन हेछि ना जते बडा हमें ताको गोलिया पानी को रखि दबा बहुत टाइम जाय कि बोतल रे भर्ती करी कि धीरे धीरे देखिबो जो हायर डेंसिटी पार्टिकल माने तळे सेटल डाउन हे जिवे लाइनिंग होई जिवे जो माने डेंसिटी लो अछि से माने ऊपर भासमान अवस्था रहिबे जो माने डेंसिटी हाई अछि हेवी अछि से माने जो रहि गेल जेंति गोडी माटी बाली जे माने कोन कहले तळे गोटे सेडिमेंटेशन प्रोसेस से माने तळे अबिका क्लोज हे कि रहि तो आमको एठी कौन करबार अछि ना ऊपर जो फ्लोटिंग डेब्रिस अछि ताको हटेबार अछि आ तळे जो रहि गेला सॉइल एंड स्मॉल पेबल ताको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस रे अलगा करि परिबा ये होछि सेही काम जोटे के हम प्राइमरी ट्रीटमेंट रे बेसिकली करि छै तो प्राइमरी ट्रीटमेंट रे हम कोन कहले ओटे ग्रेट चैम्बर बनेले ओटे सेडिमेंटेशन टैंक बनेले ग्रेट चैम्बर एठी कोन आसी देखो छोट छोट गोडी सब अछि गोडी बाली माटी ए जो वेस्ट पार्टिकल सब अछि आ माने सेडिमेंटेशन टैंक दे गला बेलकू ऊपर खाली से वाटर टी रिमूव हे की पड़ेबो अब तळे की रहि गला की जबिक रहि गला ना हे जो सब ग्रेट्स माने हे गले बा जो सॉइल हे गले स्मॉल पेबल हे गले से सब तळे हेबे कोन की जमा हे के रहिबे and the settled solids form primary sludge and the supernatant forms of primary effluent तो एई जगह जोड़ा जिंस आसिला पिला माने लेट मी टेल यू कोन जिंस हे जेठी ना ऊपर तम जो देखो जो एई जो पार्टी रहिला दिस पार्ट आपको हम कोन कर आगो जाई कि वी विल कॉल इट एज एफ्लुएंट हम ताको एफ्लुएंट बोली कहिबा जोड़ा ऊपर भासमान अवस्था रहछि खाली लिक्विड पार्ट अछि द सुपरनाटेंट ऊपर जो सुपरनाटेंट अछि दैट इज considered as is called as effluent while तळे जो पार्ट सब अबिका सेडिमेंट हे रहि जाईची जो जमा हे रहि जाईची एई पार्ट राको this is considered as primary sludge ताको हमें प्राइमरी स्लज बोली कहिले मन रखिबो हमको कोन करिवार अछि हमको ए पानी को रिवर बा नेचुरल वाटर बॉडी जे छाड़ीबार अछि ए जो पानी सब आसुची ए पानी को हमको छाड़िया पड़ियो कोठी ना नेचुरल वाटर बॉडीज को तो हमर मुख्य काम हैला ए जो एफ्लुएंट हमें पाइजे प्राइमरी एफ्लुएंट आर पॉल्यूशन लेवल को कमेबो पड़िबो फिर स्लश टी किसी मतलब हमर वर्तमान ପାଇଁ कि नहीं मन रखिबो जिंसटी प्राइमरी ट्रीटमेंट रो हम कोन कोन जिंस मिलिला ना प्राइमरी ट्रीटमेंट रो हम जोड़ा जिंस मिलिला वन इज अ प्राइमरी एफ्लुएंट एंड सेकंड इज अ प्राइमरी स्लज तो हम काम कोन ने जो प्राइमरी एफ्लुएंट मिलिची ताको हम नै कोन करबा आगो जाई कि प्यूरिफिकेशन करबा देन आ स्लज को हम स्लज डाइजेस्टर पके ताको नष्ट कर पाइबा ये होचे हमर मुख्य ऑब्जेक्टिव एबे जाई कि क्लियर तो आमे पढुतिले अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ए जाय कि माइक्रोब्स रोल आसीनी माइक्रोब्स रोल आसिया पई कि वी हैव टू वेट टिल द सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो सीवेज ट्रीटमेंट को हम दुटा पार्ट रे डिवाइड करछे वन इज अ प्राइमरी सेकंड वन इज अ सेकेंडरी प्राइमरी ट्रीटमेंट रे हमें कोन देखले ना फिजिकल रिमूवल होची जाको मन रखे पई मु तुम कहली कि पी फॉर प्राइमरी मन रखिबो पी फॉर फिजिकल रिमूवल मन रखिबो फिजिकल रिमूवल ले को प्रोसेस हम यूज करछे one is sequential filtration and second one is sedimentation तो sequential filtration हमें कौन कर ले फिल्टर आउट करछे प्रोसेस को
सिक्वेन्शियली ताको अबे धीरे 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 जेमती मामा देखि तो घरे जो बिल चाउल धोइला बेलକୁ बारंबार ताको धुआ होता है गोटे थोड़ा पानी धुआ हबो असना पानी बाहर जीवो देन सेकंड टाइम पुणी पानी भर्ती करे ताको अबे फेंटाई पुणी तो सिक्वेन्शियली करा हबो तो ऊपर जो अबे बिरी चोपा कोलसी चोपा जो छोट छोट पोको जोको हे गेले सब थिबे ता भितरे तो सब ता डेंसिटी जे लो अछि सब ऊपर भासमान अवस्था रे थिबे ताको सेठो हमें काढी की पडिवार अछि सेही टाइम सेडिमेंटेशन भी होची जो सब बड़ बड़ गोडी थिबो बाली थिबो सब तळे बसि जाइथिबे से जो तसला रे बा जो जगह आमे से धुआटी करूछे से जो बिरी चाउल धुआ होची त गोडी बाली पार्टिकुलर तळे बसि जाइथिबे आ तार जो छोट छोट चोपा हे गला बा छोट छोट जो अबिका वेस्ट प्रोडक्ट हे गला बा जोटा अबे ओटे अगाडी टाइप रे धान रे रहि जाइथिबे कि से सब ऊपर फ्लोटिंग अवस्था रहइबे तो आमे गडी जोडा जिंस करूछे गोटा हिला सेडिमेंटेशन प्रोसेस करूछे आ गोटे फिल्ट्रेशन प्रोसेस करूछे सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस रे फाइनली हमें कोन करूछे ना सब जाक जो वेस्ट पार्टिकल अछि ताको हमें रिमूव कर दोछे तो सब जिंस फिजिकली करा होची दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड हियर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटी कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रे हमें हेल्प नहीं ने ना See in this slide, what is happening here? I'm going to start with secondary treatment. जोटा होचे हमर टॉपिक रो मेन मुद्दा secondary treatment एठी हमें कोन करछे देखो ना secondary treatment रे फर्स्ट हम से लाइन गुरा को भल से देखि दियो देन तापर ताको लाइन बाय लाइन करी के हमें बुझिबा कोन जिंसटी होची इन पिक्चोरियल in primary effluent is passed into large aeration tanks and constantly agitated बस एट लटकीबा ये गोटे लाइन को भलसे बुझिबार अछि कि कोन बुझियति ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट बाहर थिला रिमेंबर द प्राइमरी एफ्लुएंट व्हाट इज प्राइमरी एफ्लुएंट इज द वेस्ट वाटर after physical removal of the hard particle of the large particle like the floating debris like the grits the soils the pebbles ताको हटेला परे जो रिमेनिंग वाटर टी रहितिला द वेस्ट वाटर जो रहितिला दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एफ्लुएंट now this primary effluent is passed the kuade pass कराइछि into large aeration tank what do you mean by aeration tank is a kind of tank जो अबे कोन अछि एयर रो प्रेजेंस रे ताको हमें बारंबार एजिटेट करिया एजिटेट माने घांटिया स्टार्ट करिया देन देखो एटी घुरेई परछि जिंस रे you can see over in this picture कि एठी हमें कोन करछि ना एजिटेशन टैंक रे ताको देखि परछो एठी तमे ताको घुरेई परछ क्लियर देखो अबे कंटीन्यूअसली स्टायरिंग करा जाउछि एजिटेशन माने हैला कोन कंटीन्यूअसली स्टायरिंग करा जाउछि ताको अबे हमें घुरौछे एजिटेशन माने हैला कंटीन्यूअसली स्टायर करिया क्लियर तो ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट हमर बनिथिला आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट ताको हमें छाडिले को जगह छाडिले ना एरेशन टैंक को छाडिले एरेशन टैंक रे कोन अछि ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर in the presence of air ଆଉ ଏଠି air କହିଲେ बेसिकली ଆମେ କାହା କଥା ବୁଝୁଛେ ऑक्सीजन କଥା ବୁଝୁଛे in the presence of air ଆଉ बेसिकली मेजरली ऑक्सीजन ର प्रेजेंस रे हम तो constantly continuously staring करिया सेकंड this allows अगर कौन हबो ना एठी vigorous growth हबो do you know what is vigorous growth माने होची एठी भयंकर रेट रे ठीक अछि in a dramatical way the growth of the useful aerobic microbes occurred ए जो aerobic microbes माने रहिले microbes different टाइप रे थांती तो माने हम प्रीवियस क्लासेस से ऑलरेडी बुझाई जे एनसीटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने कथा हमें कहूचे it can be bacteria it can be the small fungus it can be the algae small algae किछि भी हे परिबे किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगस किछरा पार्ट को हमें एठी माइक्रोब्स के काउंट कर परिबे ए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने रहछन पिले माने एमाने को डिफरेंट डाइवर्सिटी अछि they show the most extensive metabolic diversity and what do you mean by the most extensive metabolic diversity ता माने कोन ना एमाने ना different kind रे हे परिबे they can be autotroph they can be heterotroph they are cosmopolitan in nature cosmopolitan माने होला कोन ए वर्ड रा they are present in soil they are present in water they are present in air they are present in plants they are present in animals एमन कोठी भी रहि परिबे प्लांट हे गले एनिमल हे गले सॉइल हे गले वाटर हे गले कोठी भी एमाने रहि परिबे कॉस्मोपॉलिटन बोलते हम कहूचे देन अगर हैबिटेट भी वैरी करूची
Sometimes they prefer to grow in marine water, sometimes they prefer to grow in fresh water, sometimes they prefer to grow in terrestrial condition. Again, ତାଙ୍କର ଖାଇବା habit ବି change ହେଇଯିବ. They can be autotroph, they can be heterotroph. ଯଦି ସେମାନେ autotroph ଅଛନ୍ତି, like in some bacteria, some eubacteria like cyanobacteria, they are autotroph. Again, in that autotroph, again there are two types. It can be photosynthetic autotroph, it can be chemosynthetic autotroph. Yes or no? ସେମାନେ ତାଙ୍କ food formation କରିବା ପାଇଁ କି depend upon the sunlight, or they can depend upon the chemical energy when they are called as the chemosynthetic autotrophs. Again, when it comes to heterotrophs, they are of different type. They can be parasitic, they can be saprophytic, they can be symbiotic, they can be predator, they can be anything. Again, in that parasite, it can be ectoparasite, it can be endoparasite. So, body bahare rahi paribo, body bhitar rahi paribo. So, basically, tankara rahiba, tankara khaiba, tankara shape, tankara structure. If you see the shape, bacteria shape that dekhibo, bacteria divided into 4 categories. It can be coccus, rounded in shape. It can be bacillus, rod shape. It can be vibrium, the comma shape rahitibo, and all it can be of spiral shape. That was spirillum, but spirilla boli ame kahute. Then, तो ये होचे एते माने डाइवर्सिटी शो करछने बोथ इन मॉर्फोलॉजी तांकर हैबिटेट तांकर फूड हैबिट तांकर शेप स्ट्रक्चर तांकर जो पैथोजेनिक एबिलिटी ऊपर भी डिपेंड करछ माने पैथोजेन हेई परिबे ना हेई परिबे नि एमते बहुत प्रकार से डाइवर्सिटी शो करछ अब मोते कबड बैक्टीरिया माने विषय कहिले सेमते किंगडम प्रोटिस्टा अछि ताते क्रिसोफाइट्स आर देयर डिनोफ्लैजिलेट्स आर देयर यूग्लिनोइड्स आर देयर स्लाइम मोल्ड्स आर देयर एंड प्रोटोजोआन्स आर देयर See, protozoans से फोन difference हम देखियो अभी amoeboid protozoans, ciliated protozoans, flagellated protozoans, sporozoans, different categories ରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ chapter କୁ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଟିକେ basics ଦରକାର ହବ ସେ basics ତମେ ପାଇବ କୋଉଠି ନା 11th class ର second chapter that is biological classification। when our classification possible, the classification will be able to recognize which bacteria it is, or you are going to get a very basic idea. The classification कौन, what is the role of classification, what is the need of classification? कारण हमें देखो जे कहाँ विषय रे this allows the vigorous growth of useful aerobic microbes. It is aerobic microbes कहला microbes माने हेगला पूरा microorganism विषय कहछि aerobic माने हेगला कोन there are certain microorganisms who do aerobic respiration that means Krebs cycles one kari parante and semane air presence se काम करिवे and there are certain kind of microorganisms who does not depend upon the air and on oxygen and they eventually do their all the extensive metabolic work in the absence of oxygen. Then when केवल glycolysis करिवे बा fermentation process करिवे they cannot do the Krebs cycle or they cannot do the electron transport system. Clear? तो एठी हम कौन जे तम तो एरेशन टैंक रे कांस्टेंटली स्टायरिंग करछि एजिटेट करछि तो आदर हला कोन तांकर हेरे अबिया ग्रो करिया स्टार्ट हो गेला विगरस अमाउंट रे कोन ग्रो करछि ना विगरस अमाउंट रे ग्रो करछि सम यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स आउ ए जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स माने ग्रो करछन्ती दैट इज कंसीडर्ड एज फ्लक्स ताको हम कोन कहउछि फ्लक्स बोली कह जाउछि तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स फ्लक्स कोन हे गेला ना फ्लक्स इज द बैक्टीरिया associated with some fungus तो किछि गोटे अबिया फंगल फिलामेंट्स माने अछंती आ जो माने मिसी गोटे मेस लाइक स्ट्रक्चर टे बनै छंती दैट इज कॉल्ड एज बायोफ्लक क्लियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ए जो पिक्चर्स तुम देखि परथिबो इट ऑल आर अबाउट द बायोफ्लक्स आ ये बायोफ्लक्स रे को माने अछंती ना फंगस माने अछंती फंगल कॉलोनीज आ ता सरे किछि एरोबिक हेल्दी माइक्रोब्स माने मिसे की ए जगह रे हबे समाने विगरस अमाउंट रे ग्रो करिबा स्टार्ट करछन You know fungus. Fungus commandant. What is fungus? Fungus के लिए कौन पूछो? Eukaryotic, saprophytic, multicellular organism. Basically हम saprophytic खाएंगे. Depend करते हैं हमारे कहाँ पर dead and decaying matter पर हमारे depend करेगा वो करते हैं. तो जो fungus का body टा कौन सा क्या है the body is made up of filamentous hyphae. Hyphae नामक एक जिनस टी thread, elongated. In the thread like structure slender थांदी पतला थांदी जैसे बोले हाइफी थांदी से जो हाइफी माने समस्त एग्रीगेट करी की एकाठी हे के नेटवर्क बने की गोटे माइसिलियम के फॉर्मेशन करथांदी if we talk about kingdom fungi
किंगडम फंगाई रे एमते अबिका लॉन्ग लॉन्ग सब थांती हाइफिज माने आ ए हाइफी माने आपस में मिसी की एमन कोन करछन ना ଗୋଟେ कॉलोनी फॉर्मेशन करछंती आ जहा को हम नेटवर्क को देखि कोन कहउछ ना दे आर कॉल्ड एज द mycelium. So this one is single hyphae. This hyphae can be septate or can be accepted. आप अगर septum थाई भी पड़े जो septum अच्छी these are septate, जो septum नहीं these are accepted. And जोठी accepted आसिला ताको हमें sinusotic condition बोली कहिथिले. Septate वाले हिगले सब uninucleate आंकर single nucleus अच्छी पहले जो accepted वाला part रहला these are sinusotic in nature. Sinusotic रो माने होची कोन having multiple nucleus in a single cell. And there is no partition in between two cells. Partition किसी नहीं तो single cell में multiple nucleus condition आसचे. तो ये जो fungal colonies, ये जो hyphae माने मिसी की जो mycelium बनी चंदी, the name of the structure is called as a fungal mycelium. और ये जो mycelium बनी ची, और ये mycelium रे हमें कौन दिखुचे ना, ये माने ଗୋଟେ मेश क्रिएट करिचंदी. मेश बुझ पारछो, ଗୋଟେ ଜାଲ बिछेइचंदी. और ता धीरे से फंगस सहित एसोसिएट ହେଇची किए some useful aerobic microorganism like the bacteria. এই ব্যাকটেরিয়া মানে মিশি যাবে কাহা সহিত আসোসিয়েট হই যাবে কাহা সহিত না ফঙ্গাল ফিলামেন্ট সহিত তো ফর্ম মেশ লাইক স্ট্রাকচার ঠিক আছে দেন তো ব্যাকটেরিয়া মিশিতে কাহা সহিত ফঙ্গাস সহিত কোন বনেইছি না ফ্লগ বনেইছি आ पूर्व তুমি देखिथिबो कि बैक्टीरिया में जो फंगस म्हणजे आउ काहा सहित मिसिंग स्ट्रक्चर बनेइथांती algae सहित बनेइथांती जेबे algae और fungi आपस में मिसिबे the symbiotic association ताका भितर क्रिएट हबो that is considered as lichen. And how lichen and phlox are related? Now both of them have some fungal partner. Phlox रे भी fungus अछि ठीक अछि बैक्टीरिया सहित मिसि कि रहउछि एपटे भी हम lichen ने fungus अछि algae सहित symbiotic association करी रहउछि दिटा को मीनिंग अलग अलग इट इज सेम चे अछि इट इज symbiotic association करी अछि. And the biggest difference between biofloc and the lichen that lichen is a very good source of pollution indicator. माने pollution area रे जो जगह polluted ही के अच्छी pollution बहुत सारा अच्छी है lichen grow करिवो नहीं and biofloc grow ही करूची जोटा pollution अच्छी जो primary effluent जहाँ को हमें नहीं कैसिले तो constantly हम agitate करूचे constantly हम grind करूचे तो घुरोचे से जगह रे से grow करिया को पसंद करी तो mesh like structure formation कर रोहिया को सेठी पसंद करिवो. You need to remember this part. The primary effluent is basically passed into large aeration tanks and constantly agitated. Secondly, this allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flux. से जो aerobic microbes को हमें flux बोली जाओ खोजे, तक हमें grow करेगा start करे. और से flux रे की अच्छी ना बैक्टीरिया अच्छी, ट्रांसफर किच्छे fungal filaments भी अच्छे हैं. Filaments बोले branches. ए fungus के जो branch आधे में मिसी की रही ची, और mesh like structure बने ची. And these microbes ये जो बैक्टीरिया ही गले ये जो फंगस ही गले एमाने वे कौन करिवे ना कंज्यूम करवा स्टार्ट करिवे कोन कंज्यूम करिवे द ऑर्गेनिक मैटर हम मेन मोटो तो सेटा थिला ये जो एफ्लुएंट अछि जे एफ्लुएंट बेसिकली कोन अछि कि एफ्लुएंट हे गला प्राइमरी एफ्लुएंट देखला जो वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ये जो वेस्ट वाटर टी हमको मिली थिला सीवेज रो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एफ्लुएंट. And starting में देखि आछि कि सीवेज रे भरी भरी की को माने अछंती सेतरा ऑर्गेनिक मैटर अछि से ऑर्गेनिक मैटर किए खाइबो किए डाइजेस्ट करिवो किए डिग्रेड करिवो दोस बायोफ्लॉक्स. बायोफ्लॉक रे किए आसिले one is the fungal one is the aerobic microbes like bacteria and second is the some fungal filaments. से माने मिसी से ऑर्गेनिक मैटर को धीरे डाइजेस्ट करे स्टार्ट करिवे and this reduces the BOD that is called as the biochemical oxygen demand of the effluent. पिलामाने एक जिनसटी मन रखिबो 2 मार्क का क्वेश्चन आसीबो व्हाट डू यू मीन बाय BOD और व्हाट इज BOD. BOD stands for biochemical oxygen demand और biochemical oxygen demand रे हमें कहा कथा कहूजे the amount of oxygen required by the microorganism to clear the organic matter present in 1 liter of water. तो गोटे लिटर ऑफ वाटर रे जतिक सब जाक ऑर्गेनिक मैटर अछि ताकू डाइजेस्ट करिवा पाई कि ताकू कंज्यूम करिवा पाई कि ताकू डिग्रेड करिवा पाई कि ये जो माइक्रोस माने केते अमाउंट रो ऑक्सीजन रिक्वायर करछन्ती दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो बेसिकली तमे एठू जिंस मार्क कर परथिबो जेते अधिक ऑर्गेनिक मैटर रहिबो बा जेते अधिक पोल्यूशन रहिबो ताको कंज्यूम करिया पाई कि डिग्रेड करिया पाई कि सेते अधिक
बैक्टेरिया माने जन्म हेबे प्रोडक्शन हबो जते अधिक बैक्टेरिया आसीबे तांकर ऑक्सीजन रा कंजम्पशन भी बढ़िबो द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़िबो आ जेबे ऑक्सीजन रा रिक्वायरमेंट बढ़ुची तो डायरेक्टली से इंडिकेट करछि कोन द पॉल्यूशन इज तो बीओडी जो गोटे जिनस मन रखिबो बीओडी इंक्रीजेस पॉल्यूशन इंक्रीजेस बीओडी डिक्रीजेस पॉल्यूशन डिक्रीजेस क्लियर तो से BOD is directly in जो proportional to the polluting potential of a water body. যদি এই 1 liter of water रे ଯେତିକ organic matter ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ digest କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ microbes ମାନେ ଆ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ର necessity ରହୁଛି because they are aerobic microbes ସେମାନେ ଯୋଉ consume କଲେ food କୁ ସେ food କୁ ସେ break down କରେ for getting energy ପାଇଲେ ସେ energy utilize କରି ସେମାନେ ପୁଣି reproduction କରିବେ ଆଗକୁ ବଢିବେ cell division ହବ everything requires energy and you know about the very basic law of energy that it can neither be created or nor be destroyed it can only be transformed from one form of energy to another form of energy तो से बेसिकली एनर्जी पाउछिनी कोठु नै जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करछन्ते ऑर्गेनिक मैटर का बॉडी को गले एज अ न्यूट्रिशन पार्ट तां बॉडी से डाइजेस्ट हबो देन रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हबो जेहेतु माने एरोबिक माइक्रोब्स माने अछन्ती से माने एरोबिक रेस्पिरेशन करिवे एंड एरोबिक रेस्पिरेशन करियो हेले माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे से क्रेब साइकिल को हबा को हेले दे नीड दैट ऑक्सीजन दे विल नीड पिला माने एट गोटे क्वेश्चन मोर आसुची जेहेतु हम कहूची कि एरोबिक रेस्पिरेशन टी कोठी हबो एरोबिक रेस्पिरेशन टी बेसिकली हेइथाय काहा भितरे ना माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे हेइथाय you know mitochondria double membrane structure mitochondria is there तर outer membrane हला रहिला बाहर पट outer membrane भितरे पट देखो किछि फोल्डिंग हे कि क्रिस्टा भलिया जिंस प्रेजेंट हेइ थाय एंड से क्रिस्टा भितर जो पार्ट टी अछि जेमि क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रोमा हे गला जेमि न्यूक्लियस रो न्यूक्लियोप्लाज्म हे गला तो माइटोकॉन्ड्रिया ताको मैट्रिक्स बोली कहउछि द सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर and in that mitochondrial matrix the Krebs cycle the TCA cycle the tricarboxylic acid cycle टी ता भितरे हेइताय और ए जो साइकिल हवा पाई के हेले वी नीड माइटोकॉन्ड्रिया वी नीड ऑक्सीजन बट पिला माने बहुत छोटिया क्वेश्चन एट या आसुची कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास रे हम काहा बिषय कथा होची वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया एंड यू ऑल नो जे जो बैक्टीरिया माने रहिले बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जेसन दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा एंड किंगडम मोनेरा को मान अछंती ऑल दोज यूनिसेलुलर as well as prokaryotic organism. So how it is possible to do aerobic respiration in the absence of mitochondria? Answer this question to me. It's an important question. Hey, पहले हम topic को टिके debate करी तो हम पहले question सी कि we are talking about aerobic respiration. Aerobic respiration होची माने we need mitochondria. We know aerobic respiration means Krebs cycle because glycolysis समस्त बॉडी में हबो. Because glycolysis happens inside the cytoplasm. साइटोप्लाज्म सब सेल रे अछि तमे जो भी प्लांट सेल एनिमल सेल फंगल सेल बैक्टीरियल सेल सब सेल रे साइटोप्लाज्म अछि माने ग्लाइकोलाइसिस हे गेला बट व्हेन इट कम्स टू एरोबिक रेस्पिरेशन बाय दरकार बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया whether it is Krebs cycle or it is electron transport chain सब हबो कहा भीतर ना माइटोकॉन्ड्रिया भीतर but आज we are talking about bacteria and bacteria are the unicellular and prokaryotic organism. Prokaryotic means they don't have any kind of membrane bound cell organelles. So how do they do all those things? Kindly answer me in the chat box. I'm waiting for your answers. तो बैक्टीरिया पाखे जेमति कोन जिंस अछि जहार हेल्प रे से कोन करि परछि ना एरोबिक रेस्पिरेशन करि परछि dear students so interesting answer take I can give you hint is ki when the mitochondria starts with M there is something inside the bacteria which is also start with M और तार भीतर तार प्रोसेस टी होछि come on give me the answer and if you don't know the answer then kindly say sir we don't know answer we want to know don't just keep quiet chup hai rohani if you know the answer very good write the answer in the chat box if you don't know the answer then also write ki sir we don't know the answer kindly tell us
Yes. Can I expect the answer? Anybody? Aerobic respiration? CO2 is not the answer. Aerobic respiration पर carbon dioxide बाहर है, but my Swati, my question is, where does the aerobic respiration occurs in case of bacteria? As bacteria are unicellular prokaryotic organism, they're deprived of like the membrane bound cell organelles. They don't have that mitochondria, they don't have that Golgi body, they don't have that endoplasmic reticulum. There is nothing like membrane bound organelle inside the bacteria. So how do they do the aerobic respiration? What is the name of that uh, part of their body, part of their cell ଯୋଉଟା ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି aerobic respiration? ଆଉ ମୁଁ ହିଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲି ଏଇଆ କି ଦ ନେମ୍ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ତମେ ଲେଖ ସେ ଆନ୍ସରଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଏମ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତୁମେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଏମିତି ଏମ୍ ବାଲା କୋଉ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଯାହାର ହେଲ୍ପ ସିଏ କରିପାରୁଛି aerobic respiration? ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ ଆସିବ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି, ବଟ୍ ଆର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଖରେ ଯେମିତି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମରେ ଥାନ୍ତି କୋଉମାନେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି, ଆଉ ଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ହେଲ୍ପରେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏରୋବିକ୍ ରେସ୍ପିରେସନ। ତ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ ଏଇ ଜିନିଷର ନାଁ କଣ? ଆଉ ହିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଏମ୍। ଯେମିତି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ରେ କିଏ ଆସିବ? I'll wait for another 30 seconds. The 30-second answer no asila, I'll quickly jump into the next part. Our answer, of course, Mohin Devi au ki kohibo. Nobody. Okay, write down the name of the part is mesosome. Note down करो mesosome. जो mesosome टी अच्छी ये बैक्टीरिया रो जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी, तो सेल मेम्ब्रेन टी भीतर को इनवैजिनेट करे कि गोटे जिंसटी बनाई थे जाको मेसोजोम बोली कहता। सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया चारिपटे सेल वाल रहिला, तापर तार सेल मेम्ब्रेन रहिला, आ सेल मेम्ब्रेन टी एमती इनवैजिनेट करिकी गोटे स्ट्रक्चर टी बनाई थे जाको हम कोन कहितो मेसोजोम बोली कहितो। आ एई जो मेसोजोम अच्छी आ चारटा फंक्शन अच्छी जब हम कहूँ कि सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करिवो, सेल प्रोटेक्शन में हेल्प करिवो, रिप्रोडक्शन में हेल्प करिवो, ट्रांसफर से हेल्प करिवो, रेप्लिकेशन जो डीएनए रेप्लिकेट करूची तो डीएनए रेप्लिकेटर में हेल्प करिवो, सेल जो रेस्पिरेशन करूची रेस्पिरेशन में हेल्प करिवो लाइक द एरोबिक रेस्पिरेशन केस रे, आउ द सेल को प्रोटेक्शन भी दबो जेन से चारि पटे रहिची, आउ सेल को डिवाइड करि पारे। बैक्टीरिया डोंट डू माइटोसिस, दे डू बाइनरी फिशन। सुन ସେମାନେ ଫିସନ ପ୍ରୋସେସ କରନ୍ତି ଡିଭାଇଡ ହବାରେ, ସେଠି ବି ଏଇ ମେକାନିଜମ ଟି ହେଲ୍ପ କରିବ। କ୍ଲିୟର? ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଏଭରିବଡି ଟୁ ନୋଟ ଡାଉନ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ କି ଏ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛେ ଫ୍ଲକ୍ସ ବିଷୟରେ, ଫ୍ଲକ୍ସ ରେ କିଏ ଆସିଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ associated with the fungal filament. See ମୁଁ ଫଙ୍ଗସ ଉପରେ क्वेश्चन ପଚାରିଲେନି କାହିଁକି? Which fungus belongs to, fungus କୁଆଡେ belong କରିବେ? They belongs to kingdom fungi, and kingdom fungi consider କାହାକୁ କରୁଛି? All those eukaryotic multicellular organisms. ଶୁଣ kingdom fungus ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? fungi ରେ କିଏ ଅଛି? All those eukaryotic multicellular organisms are there. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ multicellular ଭିତରେ ଗୋଟିଏ exception ଅଛି, ସେ ହେଲା yeast, ଯିଏକି unicellular. But still it is eukaryotic. When I say eukaryotic, that means they are having that membrane bound cell organelles. They have that part. All those membrane bound organelles are present inside the fungus. The fungus तो आराम से aerobic respiration करिपरिबो, but what about the bacteria? Bacteria केन प्रोसेस टी करूची ना, बैक्टेरिया पाखरे कोन अछि? मेसोजोम अछि, आ जो मेसोजोम रे हेल्प रे से कोन करि पारछि? एरोबिक रेस्पिरेशन करि पारछि। इज इट क्लियर? ए जे सब जिंस बुझी पाइलो? Or you have any doubt, then kindly let me know in the chat box. Or if everything is clear, then we'll move to the next segment.
So you can see here in this slide that the primary effluent the water ta thila it blue color show करछ means it water कथा होछि ए water टी move कला कोठी की aeration tank को move करिवो एई aeration tank रे हम continuously कोन करछ ना ताको अबे agitate करौछे ताको stirring करौछे stirring कर सरला परे सेठी हम कोन ग्रो करिया स्टार्ट करछन ना बायोफ्लक्स सब ग्रो करिया स्टार्ट करिवो से बायोफ्लक्स रे की अछंती ना सब microbes are there like the fungal colonies and the bacteria ଆଉ ଏଠି ଏୟାର କମ୍ପ୍ରେସର ଏୟାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ତାକୁ ଏବେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେବେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ କ୍ଲାରିଫାୟର ରେ ପକେଇବା କ୍ଲାରିଫାୟର ତ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କାହା କଥା ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଏଠି କୋଉ ମାନଙ୍କ ରୋଲ ଆସିଲା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ରୋଲ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ସେ ଯେତିକ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଯେବେ ସେ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର ସେମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି and ତମକୁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେବେ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ waste water ରେ the amount of organic matter decreases the amount of organic matter decrease କଲା ମାନେ ସେଠି ଅବିକା amount of consumption oxygen also decreases और जो oxygen consumption टी कमुची that means the BOD biochemical oxygen demand टी कमुची ता माने pollution भी कमुची क्लियर और जब हम जानिले बीओडी कमिला पोल्यूशन कमिला आमे बे कोन कलिना से जिंस को नै पटे सेकेंडरी एफ्लुएंट को बाहर कले बट प्रॉब्लम एटी कोन हैला ना आमे गोटे जिंस क्लियर करिया को जाएंगे सॉल्व करिया को जाएंगे आ गोटे प्रॉब्लम टे क्रिएट करिले आमे ऑर्गेनिक मैटर कमेया पई कि आमे यूज करले एरोबिक माइक्रोब्स माने को बट ए जो एरोबिक माइक्रोब्स माने से ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कला समय रे से माने भी ग्रो कर जाइछनी तांकर भी नंबर ऑफ कॉलोनीज बढ़ी जाइछे फंगल कॉलोनीज बढ़ी जाइछे बैक्टीरियल माने तुम यू नो बैक्टीरिया जितने कंडीशन फेवरेबल अच्छी तो मैंने किसी मानिबे नहीं दे विल स्टार्ट डूइंग दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिंपल टिल कर पूरा स्ट्रेट तंकर लाइन ता सीधा सीधा कर्व पे बने जिवे whenever they are getting the favorable condition sufficient amount of food is there sufficient amount of oxygen is there sufficient amount of space is there food अच्छी space मिलुची oxygen अच्छी optimum temperature अच्छी से कम पई छाड़िबे तो फटाफट ग्रो करिया स्टार्ट करिवे दे विल गो स्टार्ट डूइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें भी कहला ना ऑर्गेनिक मैटर ता कौन कमी गला बट ए जो बायोफ्लक्स फॉर्मेशन हे जे सी वे गोटे पॉल्यूटेंट हे के हम तक रहला तो हाउ टू डील विथ दैट वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट कौन कहला ना ए जो जिंस तुम कहतिले व्हाट इज बीओडी क्वेश्चन पहले कौन लिखिबो यू कैन आल्सो राइट इट डाउन नोट इट डाउन and BOD stands for the biochemical oxygen demand. It is the amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize all the organic matter in 1 liter of water. जो गोटे लिटर पानी रे जेतिको भी ऑर्गेनिक मैटर माने अछंती ताको हमें कोन करछे एठी ना ताको हमें ऑक्सीडाइज करूछे व्हाट इज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन माने कोन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यस और नो तम धीरे धीरे कोन करछ ना ब्रेक डाउन कर जाउछे ऑक्सीडाइज करछ मतलब ब्रेक डाउन करले ऑक्सीजन ऐड करले तले हाइड्रोजन को रिमूव करले तो बेसिकली हाइड्रोजन रिमूव करी जीवा सब्सटेंस टी गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टी भांगी की गोटे सिंपल कंपोनेंट से कन्वर्ट हे जिवो आउ एथ पई कि हमें कहार हेल्प नोचे ऑक्सीजन हेल्प नोचे तो इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर तो वाटर रे किते ऑर्गेनिक मैटर अछि ताकू मेजर करिया को हेले we can see the BOD the BOD is directly proportional to the polluting potential से कैसे लिखिला the greater the BOD more is its polluting potential ए तीनटा को लाइन वेरी इंपोर्टेंट तो माने पिला एठी को कानिया पाउजन ना तो माने गोटे सिंपल वे रे सिंपलीफाइड वे रे लाइन सब मिलुची ये तीनटा पॉइंट भलसे मन रखो लाइक व्हाट इज BOD ना द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड केते ऑक्सीजन कंज्यूम हेची by the bacteria not about the fungus and all by the bacteria to oxidize all the organic matter present in 1 liter of water हमें एटे 1 liter को स्टैंडर्ड हिसाब रे नैछे तो गोटे लिटर पानी रे जति को भी ऑर्गेनिक मैटर अछंती तो हम खाई की कंज्यूम करिया पई कि केते अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दरकार पडुची दैट इज कॉल्ड एज BOD एंड ये जो BOD को हमें गोटे मेजरमेंट हिसाब रे नउचे हमें को मेजर करिया को हेल्प करचे about the presence of organic matter in the water जे पानी रे केते ऑक्सीजन केते ऑर्गेनिक मैटर अछि ता कंज्यूमर में केते ऑक्सीजन दरकार ई गोटे मेजरमेंट केस रे जाई परिबो और लास्ट लाइन वेरी इंपोर्टेंट लाइन ए लाइन ते बहुत इंपोर्टेंट आको मन रखिबो नियाती से कोन कहिची द ग्रेटर द BOD BOD जते बढ़ी बढ़ी जीवो
आमर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी सेते बढ़ी बढ़ी जीवो मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल आगो बॉक्स कर लिखि दबो द ग्रेटर द बीओडी द मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ता पॉल्यूटिंग पोटेंशियल जेते अधिक थिले जे बीओडी कमुची ऑक्सीजन डिमांड कमुची ता माने पॉल्यूशन धीरे धीरे कमी कमी जाउची जे बीओडी हाई अछि ताले पॉल्यूशन भी हाई अछि यू नीड टू रिमेंबर दिस सिंप्लिफाइड लाइंस नेक्स्ट सेकेंड secondary treatment रे the biological treatment रे हम कौन देखिले the effluent is then passed into a settling tank से effluent को हमें कुआडे पास करले ना settling tank रे पास करले where the bacterial flocks are sediment and this sediment is called as activated sludge you can see in this big chamber हमें कौन करछे ना गोटा हला influent गोटा हला effluent influent जो एंट्री करछि effluent टा बाहर छी then the influent first हमें influent का को देखिले primary treatment रे the waste water the sewage is an influent सेठू हमें filtration गला परे sedimentation गला परे हमें कौन पाइले बे ना effluent पाइले primary effluent influent माने एंट्री गला effluent माने बाहर कौन सा सेही जो प्राइमरी एफ्लुएंट हम बाहर करथिले ताकू कोड एंट्री करिले एरेशन टैंक रे भर्ती कले एरेशन चैम्बर रे भर्ती कले तो एरेशन चैम्बर को आसला पर धीरे धीरे कौन कले ना अबिका कार्डियो बैक्टीरियल कॉलोनीज फंगल कॉलोनीज माने ग्रो करबा स्टार्ट कले जब से माने ग्रो कले ସେମାନେ ऑर्गेनिक मैटर खाइबा स्टार्ट कले जब ସେମାନେ ऑर्गेनिक मैटर खाइले देन सेठी जो पानी टी बंचेला से पानी को हमें कौन कले ना दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एफ्लुएंट और जब से सेकेंडरी एफ्लुएंट बाहर को आसी छी से एफ्लुएंट को हमें कौन करे पास कर देले इनटू सेटलिंग टैंक and where the bacterial flux are sediment तो settling tank को पठे दबा तो settling tank में अधे settle down ही जिवे ये जो bacterial flux माने जो अच्छे कि ସେମାନେ सब grow कर नहीं चंदी ସେମାନେ जो colony बनै जने ସେମାନେ अब सब तळे sediment हबा start करिवे से बसिबा start करिवे और जो sediment टी बनै ची that is called as activated sludge और sludge रे माने असला गोटे waste material रे जा को हम आगो जाई कि अंकल भाबिका भांगीबा स्टार्ट करबा आको मारिबा स्टार्ट करबा अब पानी भी क्लियर हो आसलानी बट से जो पानी रे से जो बैक्टीरिया माने ग्रो करते जो फंगस माने ग्रो करथिले the sediment part is called as activated sludge and a small part of this activated sludge is formed back into the addition tank to serve as the inoculum ठीक अछि एडी जो inoculum वर्ड यूज कराय छै एडी inoculum रो माने हला कोन एडी inoculum रो माने हला वन काइंड ऑफ स्टार्टर जेमता हम क्षीर को दही बनिया को हेले हम दरकार पड़ुछि किछि अमाउंट रो दही जो क्षीर अछि क्षीर रहिला क्षीर की अछि लैक्टोज अछि एसो न तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड पे बनेबो ना गोटे बैक्टीरिया टी कोन करना लैक्टोबैसिलस ए जो लैक्टोबैसिलस टी कोठ अछि इट इज प्रेजेंट इन द कर्ड रे था प्रेजेंट तो हम मिल्क को कर्ड रे कन्वर्ट करे को हेले किछि लिटिल अमाउंट रो कर्ड को आने की से मिल्क रे पकेयो पड़ो क्षीर को टिके हल्का उषम करिबा हल्का उषम हला माने ऑप्टिमम कंडीशन असला दानो पई की और सेही जो बैक्टीरियल कॉलोनीज को आनी के हम छाडुचे तो सेठी आराम से ग्रो करे स्टार्ट करिवे से जो दही को टिके आनी के हम खिला रे पको था दही द लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड इज कॉल्ड एज द इनोकुलम दैट इनोकुलम का माने हेला कोन वन काइंड ऑफ स्टार्टर पैक और लिटिल अमाउंट ऑफ पार्टी स्टार्टर कहि परिबो बा इनिशिएटर कहि परिबो जे प्रोसेस स्टार्ट करूची तामाने ए जो एरेशन टैंक ए जो एक्टिवेटेड स्लज रे को माने अछंती ना एक्टिवेटेड स्लज कहा कमी कहिले सेटलिंग टैंक रे जो बायोफ्लक्स माने जमा हो जाइथिले द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बायोफ्लक्स जो जमा हो गइथिले से बैक्टीरियल फ्लक्स माने को हम सेडिमेंट कले आ सेडिमेंट रे हम कोन मिलला ना एक्टिवेटेड स्लज मिलला जो तळे बसे सेडिमेंट हो जाइछि सेही जो एक्टिवेटेड स्लज का हम कोन करे ना तो किछटा अमाउंट को किछटा अल्पटा अगेन कम कम बैक पछो पठे देले कहा पाको पठेले इनटू द एरेशन टैंक आ एरेशन टैंक रे हबो कोन एरेशन टैंक रे से इनोकुलम हिसाब रे काम करबो तो एबाटे जो इन्फ्लुएंट एंट्री करला सेठी आसले एरेशन टैंक रे फुनी जो भी एफ्लुएंट भारी जाईची से गला फाइनल सेडिमेंटेशन प्रोसेस रे एही जगह को माने सब अछंती ऑल द एक्टिवेटेड स्लज आर प्रेजेंट इन दिस एरिया और एही जो एक्टिवेटेड स्लज अछंती आंको सहित कोन करा जीवो ना आंको टू किछिटा पार्ट को नै क्वाड पठाई गला ना अगेन एज द इनोकुलम एठो किछिटा अमाउंट को बाट नै पकाई गला एंड कांस्टेंटली आंको एआर दिया जायछि ठीक अछि एमान कांस्टेंटली एआर बा बेसिकली कहिला बा ऑक्सीजन कथा कहूचे आंको डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलेला एंड एठी से माने एजिटेट हवा स्टार्ट करिवे
constantly stirring हवा start करिवे so there are some bacteria there are some fungus colonies आ मान जब एरेशन टैंक रे पड़िले एडी एरेशन हबो आ एठी जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट अछि आको खाई की कंज्यूम करी की बैक्टीरियल आ फंगल मिसी की कोन बनेबे फ्लॉग बनेबा स्टार्ट करिवे द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड प्रोसेस बंद हबने तो एठु किछि पार्ट हम जानिले फोन ने के जगह रे पहुंचे देले ये होछ हम कथा देन आ एठी जो फाइनल सॉल्वेंट जो मिली छै हमकु ए फाइनल सेटलिंग टैंक रे जहां भी जिनसे मिलिला ताको मैं एज एफ्लुएंट करके बाहर को पठि दबा ठीक सी एफ्लुएंट बाहर गला करी आ एठी जो स्लज माने सब रहिले से एक्टिव स्लज को एबे आको डिग्रेड करिबा आ ये जो वेस्ट हमर अछि तम लागुची ये गोटे वेस्ट बनला बोली बट तुम देखि पारिबो ये वेस्ट रो हमें बेस्ट जिंस बनेबा विल मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस वेस्ट आ ए जो बेस्ट आउट ऑफ दिस वेस्ट जो बनिबो ताको हमें कोन पे यूज करिबा ना बायो फर्टिलाइजर बने पे यूज करिबा जो बायो फर्टिलाइजर के आगु जाई हमको हेल्प करिबो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सपना देखु छे तो may reduce the use of chemical pesticide, chemical herbicides, chemical weedicides, ये जो chemical fertilizer एमान समस्त कमेया पाई कि हमें ऑर्गेनिक ऊपर डिपेंड करूचे तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीवा जो हेल्दी एनवायरनमेंट पे जीवा चाहूचे ता पई हम जो बड़ा अमाउंट रे बायो फर्टिलाइजर दरकार थिला एठो हम जिंसटी पाई करियो बुझिपारछटी तो म्युनिसिपालिटी वेस्ट वाटर जो थिला से वेस्ट वाटर जो हम कौन करछु ना धीरे धीरे ताको आगो प्रमोशन करे कि जो क्लियर पानी बनाउचे आ से क्लियर पानी बनेवा सहित सेठो हम कोन मिलुची ना सेठो हमको मिलुची बायो फर्टिलाइजर मिलुची आ गोटे बढा जिंसटी अछि आगो तम जानिबो एठो बायो गैस भी फॉर्मेशन होउची ये सुनो ये जो बायो गैस जहाँ को हमें फ्यूल रूप में यूज कर पारछे ये भी आगो को बनिबा start habo you need to stay tuned till the last of the class to know about this in the better way कि जो small part of activity sludge थिला तो पुणी pump back कराला aeration tank को to serve as the inoculum once हम inoculum ready हे गेला next हम एंट्री करबा को जगह को कि कोन का परे स्टडी करा जाय छै now the secondary treatment रे हमें पुणी से देखले कोन the remaining sludge is formed into the large tank called as the ये जो remaining sludge रहिला आर अल्प टिके स्लज हम कोन कहले पठै दिथले एरेशन टैंक को आउ जो बड़का स्लज रहिला इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक तक हम लार्ज टैंक पठैले दैट इज कॉल्ड एज एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर रिमेंबर दिस पॉइंट ए जो पार्टटा रहिला जो प्राइमरी एफ्लुएंट हो हमें आगु नहीं कि सेठी बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करिया को अलाउ करले एरेशन टैंक में पठैले एरेशन टैंक से कोन हला आगु जाय कि बायोफ्लक्स बनेला बायोफ्लक्स माने कोन कहले जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करले ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करके डिग्रेड करले टाइम रे से माने कोन प्रकार पहिला ऑक्सीजन दरकार पहिला और से ऑक्सीजन को यूज कर से जो काम करथि त हम बीओडी बोली कहले एंड बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल the greater is the BOD the more is the polluting potential the less is the BOD the less is the polluting potential जेबे से BOD रिड्यूस करी गला पोल्यूशन हमर कमिला संगे संगे हम मूव करले कुआडे सेकेंडरी एफ्लुएंट को पठे दिले बाहर को आ सेही जो बायोफ्लक्स माने बनेथिले ताको सेडिमेंट करे कि सेठो बने दिले हमें एक्टिवेटेड स्लज सेही एक्टिवेटेड स्लज द किछिटा अमाउंट को अगेन हमें पंप बैक कर दिले टू द एरेशन टैंक और द लार्ज अमाउंट ऑफ जो मॉलिक्यूलर स्लज टी जो एक्टिवेटेड स्लज ताको में पठेबा को कि ना गोटे लार्ज टैंक अछि जा ना होछि एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर और एनारोबिक माने कोन ना सेम सेठी हमें ऑर्गेनिक मैटर को खाइबा पाई कि यूज करथिले एरोबिक माइक्रोब्स मानकर एबे से एरोबिक माइक्रोब्स मान को मारिया पाई कि हम यूज करते एन एरोबिक माइक्रोब्स मान को हेल्प हमें नोचे there are some anaerobic sludge bacteria that digest the bacteria and the fungi in the sludge by the producing gases like CH4 methane gas hydrogen sulfide H2S and carbon dioxide and these gases form the biogas तो बुझिपो छोटी कोन जिंस हिची कि एथि हम से जो एरोबिक माइक्रोब्स माने ग्रो कर जाइछले जो मन में हमें कहतले कि एरोबिक माइक्रोब्स माने ग्रो करबा स्टार्ट करले तांको हमें बंद करिया पई कि तांकर कंसंट्रेशन कमेया पई कि हमें मीथेन आउ जो H2S आउ जो CO2 गैस बनवा स्टार्ट करले बाय द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया
Anaerobic bacteria मान तमे जानिଛ ସେମାନେ ତ एनर्जी कोठ पाइबे ना केमिकल बॉन्ड को भाई दे आर बेसिकली डिकम्पोजर से डिकम्पोज करेबे ए जो ऑर्गेनिक मैटर खाई की जो माने बढ़ जाय छै एरोबिक बैक्टीरिया माने तांको माने मारी ठीक अछि तो बैक्टीरिया में देखो पिला माने दुटा कैटेगरीज थिला गोटे थिला आर्की बैक्टीरिया आ गोटे थिला यू बैक्टीरिया listen if you remember about bacteria are divided into two categories basically based upon their cellular structure सेलुलर स्ट्रक्चर को देखिकी से माने दी भाग विभक्त हो जाइथिले गोटे थिला आर्की बैक्टीरिया और थिला यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया आर दोस बैक्टीरिया बट प्रिमिटिव इन नेचर प्रिमिटिव माने सर बहुत पुराना कालिया बैक्टीरिया सब तुम देखिबो प्रिमिटिव अछथि एंड सेकंड एमानो पाखि गोटे यूनिक सेल वाल थिला जो यूनिक सेल वाल हेल्प रे दे कैन रेजिस्ट एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हार्श एनवायरनमेंट से कंडीशन सब सही जिवे से हार्श एनवायरनमेंट वाले कौन बेसिकली बुझौछि कहा कथा मोटी कहछि like high temperature they can easily penetrate high temperature so is they can easily extend experience in that hollow condition like the salty areas नॉले से माने कि छोटे मार्सी एरियाज जोटा अबिका डंप यार्ड अछि से जगह से मन रहि जिवा आराम से because they are having a unique cellular structure और सही जो जगह से माने रहउचंदी on that basis they are divided again into three categories one is a thermoacidophils one is the halophiles and third is the methanogens the third methanogens asila ताहु जो बैक्टीरिया माने अछंदी those are called as methanobacterium जो माने methane gas produce करूछंती and they are basically found in the stomach of the ruminant animals when I say ruminant animals are those animals which are having a rumen inside the stomach in the cattle माने हे गले cows buffaloes oxes ए मान जो हे गले आंको पेट रे आंको स्टोमक रे गोटे पार्ट अछि गट रो गोटे पार्ट दैट इज कॉल्ड एज rumen जो समान जो खाइबा खाइले से जांगे सेठी टेम्पररीली स्टोर हे और जो rumen ए जो घास खाइछन जो पत्र खाइछन जो टेम्पररीली स्टोर हेछि ताको ए मिथानो बैक्टीरियम माने ताको डिग्रेड करे कि नष्ट करे कि तो मीथेन गैस बनेबे और सेही जो मीथेन गैस बनी जे CO2 बनी जे H2S बनी छी ताको हमें बायोफ्यूल हिसाब रे बायोगैस हिसाब रे यूज करी तो यू नो कि जो गाय जो डंग हे गला काउ डंग हे गला गोबर हे गला काजे से मिथानो बैक्टीरियम माने अछंती और समान ताको ग्रो करे कि ताको भांगे कि तो मीथेन गैस बनेबे जो ताई के हमें गोबर रो घसी बने के यूज करते एज अ फ्यूल हिसाब then गोटे बायोगैस भी मिलिया स्टार्ट होला मोटे फ्यूल मिलिया स्टार्ट होला इजंट इट इंटरेस्टिंग थिला माने हमें हम म्युनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर हम घर रे बाहर जे जो हाउस होल्ड जो वेस्ट वाटर को नहीं की हमें फ्यूल बनै पड़छे इंडिया इज अ कंट्री जे कि डिपेंड करछि चार एनर्जी पाई की बाहर स्टेट ऊपर इसो न बाहर कंट्री पे डिपेंड करछि वी डोंट हैव द एक्सेस टू नेचुरल पेट्रोलियम गैसेस हम पाखे नाइ छै नेचुरल पेट्रोलियम हमें मिडिल ईस्ट ऊपर डिपेंड करछे हमें रशिया ऊपर डिपेंड करछे हमें यूरोपियन कंट्रीज माने से सब मिडिल ईस्ट जो सब रहिला अफ्रीका सऊदी अरब हे गला दुबई हे गला बा जो ईरान हे गला ए सब कंट्रीज माने को हमें डिपेंड करछे टू परचेज दैट फ्यूल तो एवरी ईयर हमर जो हार्ड अर्न मनी जो फॉरेन करेंसी हम पाखे अछि तो फॉरेन करेंसी यूज करके हमें कंपलसरी जिंस बाय करछे तो कौन करले से जिनसटा कमई परिबा हमें ना हम जो रिसिप्ट हे जाउ जे क्वाड को ना बायोगैस वाला शिफ्ट हे गया बायोफ्यूल एड दिबा और बायो वर्ड आसी गला माने ये एनवायरनमेंट ପାଇଁ भी फ्रेंडली हे कि रही तो आगे किसी नुकसान नहीं ये जो हमर मिथेन गैस हे गला ये जो बायोगैस हे गला अगर आको हम फ्यूल हिसाब यूज करिबा तो डेफिनेटली हमर फॉसिल फ्यूल ऊपर जो डिपेंडेंस सेटा कमी कमी दिबे आमे आ फॉसिल फ्यूल ऊपर डिपेंड करिबा नहीं आमे आको पे डिपेंड कर स्टार्ट करिबा जेमती गवर्नमेंट आजिकली बहुत फोकस करछि इथेनॉल फर्मेंटेशन ऊपर ए जो इथेनॉल फर्मेंटेशन हिला परे ताको हमें पेट्रोल ले मिसई की एबे साइज E20 पेट्रोल 80% तर रहिला पेट्रोल 20% होची इथेनॉल ताको हमें E20 बोली कहउछि आ एटा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश किसी जगह स्टार्ट हे गेलानी ताका रामनगर जो डिस्ट्रिक्ट जे सेपटे हे गेला एटे गवर्नमेंट फोकस करछि कि मोर सुगर केन कल्टीवेशन ऊपर जिते अधिक सुगर केन बनिबो जैसे उन्हें सीरियल प्लांट बनिबो ताकर जो सब वेस्ट मटेरियल हे गेला जो चोपा हे गेला ता जो खोलपा हे गेला ता जो अब सुगर केन जूस फला पर जो वेस्ट पार्टिकल बनिला ताको में फर्मेंटेशन करी सेठा हमें गैस बनी परिबा फ्यूल बनी परिबा इथेनॉल बनी परिबा जहां हम पेट्रोल से ब्लेंडिंग करी परछे exactly in this way it con hna the cs4 the h2s the co2 these gases form the biogas and then the effluent is released into the natural water bodies like the rivers and the stream and every जो effluent बनी छिला जो secondary effluent कहि चली
सी अबिका तो प्योर हे गेलेनी नॉट ए 100% प्योर बट समहाउ द BOD reduces माने polluting potential भी कमे छी once pollution कमे छी तार it is released into natural water bodies like a river like streams ताको हम पठे परिबा तो इट्स बेसिकली ह्यूमन थिंग आमे कहि परिबा आमे एटडे ह्यूमन लाइक जिनसोडा आमे करिचे गोटे मानविकता शो करचे ना कि डायरेक्टली म्युनिसिपल वेस्ट आसला तो डायरेक्टली नहीं नहरे पके देबा दैट इज कॉल्ड एज इनसेन वर्क दैट इज इनह्यूमन एक्टिविटीज ये आम घर जो वेस्ट पार्टिकल बाहरला व्हाई डू द एक्वेटिक environment will suffer why do the aquatic organism will suffer आमे जिनसे खराब करते सेवन के भोगवे ताको तो हमर काम होला कोन ए जो खराब वाटरटा हैला जो वेस्ट वाटर आसला ताको हम प्यूरिफाई करी की तो सफा करी की लेस पॉल्यूटिंग करी की ताको पानी रे छाडीबा रिवर बॉडी रे छाडीबा आ से जो पॉल्यूटेंट हमें कमी छे ता पे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करछे ता पे जो हमें जो मैकेनिज्म यूज करछे सेठू पुणे हमें लाभ पाई पड़तबा और से लाभ दब किए ना बायोगैस ये जो मिथेन गैस प्रोडक्शन है छी ये बायोगैस हम लाभ दब आ एति कि नहीं ये बायोगैस सरी गेला परे भी जो रिमेनिंग पार्ट रहिबा ताको हम फर्टिलाइजर हिसाब रे भी यूज कर परिबा तो रिमेंबर ये हला तम स्लज डाइजेशन मशीन इट जो स्लज अछि पड़े एक्टिवेटेड स्लज ताको हम ड्रायर रे सुखेइले देन तबे ड्राई स्लज फिनिशिंग हेसला परे सेठो हमर कोन भाला ना बायोगैस फॉर्मेशन ए जगह जो यू कैन सी ए बायोगैस प्रोडक्शन हेची और बायोगैस को हम यूज कर परिबा बायोफ्यूल हिसाब से ताको जाई इंधन दपर हम दब मिथेन टैंक रे स्टोरेज से देन I'll give a quick like structure about all this chat ओडे फ्लो चार्ट हिसाब हम आपको मन रखि परिबा पिला माने फर्स्ट हम पाखे थिला प्राइमरी एफ्लुएंट आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमेंबर लाइन बाय लाइन मन रखो कोन कोन जिंस होईची आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट दे आर हैविंग दैट प्राइमरी एफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट करले हम भाई कोन रहला प्राइमरी एफ्लुएंट रहला से प्राइमरी एफ्लुएंट को हम क्वाड पठेले हम पठेले ताको एरेशन टैंक को जगह पठेले एरेशन टैंक रे ये एरेशन टैंक रे कोन हबो बिया कांस्टेंट एजिटेशन हबो कांस्टेंट एजिटेशन माने कोन ताको हमें घंटे जे कांस्टेंटली स्टायरिंग करी एजिटेट माने कोन बोले कांस्टेंटली स्टायरिंग करजे ताको आ एठी एरेशन टैंक माने कहा प्रेजेंस रहिची ना ऑक्सीजन रे प्रेजेंस रहिची और कांस्टेंट तो एजिटेट करू छे तो एही जगह रे किछि एरोबिक बैक्टीरिया माने ग्रो करिवे जो माने फ्लक्स बनै चंदी व्हिच कंज्यूम ऑल द ऑर्गेनिक मैटर जति ऑर्गेनिक मैटर थिला सेमन तो कंज्यूम करि गले आ जब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हे गला ता माने एक जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी रिड्यूस हे जिवो कमी जिवो व्हाट इज बीओडी बी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल और आसीगला ऑक्सीजन डी रे हे गला डिमांड और ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टी कोन हे छै रिड्यूस हे छै रिड्यूस माने कम छै और जेबे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कमिबो ताले पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी कमिबो ये जो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल थिला दा पार्टटा से पॉल्यूटिंग पोटेंशियल पार्ट भी कमिबो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूशन तो बीओडी इंक्रीजेस पॉल्यूशन इंक्रीजेस बारंबार कहूची बीओडी रिड्यूसेस पॉल्यूटिंग पोटेंशियल रिड्यूसेस डिक्रीजेस once हमर एटी पॉल्यूशन कमिला बीओडी कमी गला देन हम कोन करबा आ पड़ा लाइन के सीधे ठीक आसिला क्लियर नाउ द एफ्लुएंट एफ्लुएंट कोड पठाबो सेटलिंग टैंक को पठाबो सेटलमेंट टैंक जब से एफ्लुएंट सेटलमेंट टैंक को जीवो देन सेठी जो पार्ट टी तळे सेटल डाउन हे गला ताको हम कहिबा एक्टिवेटेड स्लज बोली कहबे ताको एक्टिवेटेड स्लज आउ जो रिमेनिंग वाटर रहिला से तो प्योर ही जाईची प्योर एग्जैक्टली न हेले बे तार पॉल्यूटिंग पोटेंशियल कमी जाईची बीओडी कमी जाईची ताको हम छाड़ देबा कोठी नेचुरल वाटर बॉडीज देखो एठी तो हमर जो प्राइमरी एम थिला कि प्राइमरी एम हमर कोन थिला कि वाटर को प्यूरिफाई करबा जो वेस्ट वाटर रो हमको प्यूरिफाई करी की बा लेस पॉल्यूटिंग करी की छाड़ीबा कोठी की ना हमर रिवर बॉडी छाड़ीबा तो एठो प्राइमरी एम क्लियर हे गेला किनो एई जो प्रोसेस रे हमें जहा जहा जो क्रिएट करै छे एबे ताको अब सफा करया स्टार्ट हे ता काम अब स्टार्ट हिया and main aim हमर हे जाईछे like if you see about the photosynthesis process glucose is the main target हम photosynthesis कोन बनेगा ग्लूकोज बनेगा अछि then but glucose बनिया सहित ऑक्सीजन भी बनु एज अ बाय प्रोडक्ट सुन नो तो से वाला जिंस ग्लूकोज बनि जाईछी हम ऑक्सीजन आनिया अछि बा कहबे ऑक्सीजन बनि जाईछी हम ग्लूकोज बनिया अछि जहा ले गोटे मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट रहबे तो इसमें हमर मेन ऑब्जेक्टिव ता क्लियर हे गेला कि नेचुरल वाटर बॉडीज रे हम जो पानी को मिसैले तो पानी रो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल कम अछि एठो हम लिखि पाइले बीओडी कम अछि बीओडी कम अछि
माने पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी कमी आ पॉल्यूटिंग पोटेंशियल कमी माने से पानीटा भी लेस पॉल्यूटेंट अछि तो अबे पानीटा जो दूषित थिला से बहुत कम दूषित अछि आपको हम डायरेक्टली पानी रे छाडी परिबा हम रिवर रे तो छाडी देले स्ट्रीम रे छाडी देले बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग ए जो फ्लक्स सेडिमेंटेड हितिला जा को में एक्टिवेटेड स्लज रो ना देथिले एबे से एक्टिवेटेड स्लज रो किछिटा पार्ट को रिमेंबर किछिटा पार्ट को हम कोन करले ताको छाडी देले कोठी की ना एरेशन टैंक को अगेन और तार ना हम कोन देले इनोकुलम तार ना हम देले इनोकुलम माने मु तुम कोन बुझितेली ना वन काइंड ऑफ स्टार्टर जेमती क्षीर को दही रे कन्वर्ट करिया कहले हमहु टिके दही दरकार ठीक सेमती हम मेड इनोकुलम वाला पार्ट देले तमे क्लासरूम में देखि दियो तमर बहुत सांग थिबे बा यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट जो मतलब एग्जाम रे जो क्वेश्चन पचरा हिची तो आंसर जणा अछि बस फर्स्ट लाइन ता और फिर फर्स्ट लाइन नोट किथो बस सर फर्स्ट लाइन ता कहि दियन दो हे जो से पार्ट हां आई कैन रिमेंबर आई कैन कोरिलेट बट से फर्स्ट वर्ड ता मन पडुनी ठीक सेमती एठी प्रोसेस करिया पई गोटे स्टार्टर दरकार और स्टार्टर होची किए ना ए एक्टिवेटेड स्लज जब आमे आपको एठी देले एरेशन टैंक रे ये आराम से ग्रो करी प्रोसेस कंटिन्यू करिवो एंड जो बाकी जिनस बंची गला ताकू पाटे पठायला ना ताकू पठायला एंड एरोबिक स्लज डाइजेस्टर एठी ऑक्सीजन आउ एंट्री करि परिबो नाही और जदि ऑक्सीजन नाही ऑक्सीजन एब्सेंस से मन सेम टू मरि जिवे जो बायोफ्लॉक एटी बनी थिले तो ऑक्सीजन प्रेजेंस रे ग्रो करथिले ऑक्सीजन कम मिला आ डेथ होवा स्टार्ट होला और जब एमागो डेथ होला जेनटे एनारोबिक बैक्टीरिया माने डाइजेस्ट हेकी स्लज रे नष्ट करिदेले ताकू आ एमाने कोन बनिवा स्टार्ट कले ना दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द बायोगैस कोन माने बायोगैस बने कारण माने एनारोबिक रेस्पिरेशन गले एनारोबिक रेस्पिरेशन माने कोन बनेले मीथेन बनेले CH4 मीथेन H2S CO2 खाली H2 ए सब गैस बने स्टार्ट यू नो हाइड्रोजन कौन करिवो जळिबो निजे हाइड्रोजन निजे जळिबो ए सुनो ऑक्सीजन तो हेल्प जळियो रे और ये जो मीथेन गैस माने बनेले दिस मीथेन गैस विल यूज एज द बायोगैस हिसाब रे बन देन आई होप तमने जे बुझि पारथिबो आईडिया देखे कि प्राइमरी एफ्लुएंट्स एरेशन टैंक कांस्टेंट डिस्टिलेशन हैला एरोबिक बैक्टीरिया इनफ्लक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर बीओडी रिड्यूस कला एफ्लुएंट टू सेटलिंग टैंक रे गला सेठू नेचुरल वाटर बॉडीज को हम एफ्लुएंट को छाड़ देले देन सेठू जो वाट टी भाइला ताको फ्लक्स बोली कहले से जो फ्लक्स को हम एक्टिवेट स्लज को हला सेठू किछि पार्ट को हम इनोकुलम हिसाब एरेशन टैंक को छाड़िले आउ जो रिमेनिंग पार्ट ला लार्ज पार्ट तक हम छोटेले एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर रे ऑक्सीजन एब्सेंस रे एठी कोन एनारोबिक रेस्पिरेशन हैला देन बैक्टीरिया कोन कला ना एनारोबिक बैक्टीरिया समस्त खाइ देला आ सेठू कोन भाग कला बायोगैस बनेला it constantly process टी कंटिन्यू चली और ये सब सडिला परे देन आसला कोन कथा ना हम पूरा प्रोसेस टा को एट ग्लांस देखिबा कि पूरा प्रोसेस टी ए वाला जिंस होची यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड तो जानि पर कोन जिंस टी हेची प्राइमरी ट्रीटमेंट कोन हैला सेकेंडरी ट्रीटमेंट कोन हैला आ सेट सला बस स्लज डाइजेशन देन ड्राई स्लज फिनिशिंग देन फाइनली मीथेन गैस बनेले आउ जो पार्ट हमर रहि गेला ताको हम यूज करी कोन बनउचे आ ताको हम यूज करी बनउचे हमर फाइनल प्रोसेस रे फर्टिलाइजर फॉर्मेशन होची आज जो सेकंड क्लास जो स्टार्ट है नोटा कंप्लीट सेकंड क्लास स्टार्ट करिबा देयर आई डिस्कस अबाउट इन वेरी डिटेल्स दैट व्हाट इज बायोगैस एंड हाउ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इज रिलेवेंट टू ह्यूमन वेलफेयर हमर ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब्स में रोल कोन रहउची आ बायोगैस बेसिकली कोन काहे के आपने में जानिबा काहे के में डिटेल से पढिबा नेक्स्ट क्लास रे 5 में स्टार्ट करियो देखि परछो हमें नदी को पूजा करछे वी इंडियंस जनरली वर्शिप टू आवर रिवर्स हमें कहूचे पानी हिला गंगा माता ठीक है जेटा गंगा ना कहि कि हमें सूर्य को पानी दउचे ताको मुंडिया मार जेटा पूजा करछे इन एवरी इंडियन ट्रेडिशन जेम ओडे ओडिया हिसाब रे हमें देखि परिबा वी द पीपल ऑफ ओडिशा जेबे भी हमरा कार्तिक पूर्णिमा आसुची कार्तिक मास में एंड दिन पंचक 5 दिन सैला पर जो कार्तिक पूर्णिमा आसुची बोईत बंधाण हुए डंगा बसा हुए हम समस्त बाहर सकाल सकाल उठी भोर भोरू नई कूले पहुंची डंगा बसिया से गंगा पानी को हमें नई पानी को हमें मुंडिया मारुचे डंगा बसौचे मासक जगह पुण्य कथा कहूचे बट से डे एंड रे हमें कितने सारा पोल्यूटेंट कितने कचरा कितने वेस्ट मटेरियल कितने थर्मोकोल पार्ट कितने माइक्रोप्लास्टिक हम जनरेट करी पानी को नष्ट करी आछे तो पानी को गोटे टाइम रे पूजुचे आ सेही पानी रे सब जगह विसर्जन सामग्री जो अलिया आवर्जना कचड़ा सब ने सेठी पकोचे तुम इमेजिन करि परिबनी कि हमें एते वेस्ट जनरेट करते बिकॉज़ हम पॉपुलेशन अधिक जेहेतु पॉपुलेशन अधिक ताले कंजम्पशन भी अधिक
कंजम्पशन अधिक होला माने वेस्ट पार्टिकल अधिक बाहरिबो और से जो वेस्ट पार्टिकल बाहरला से जाई पानी माने करे मिसिकी एमती हमर बड़ बड़ रिवर बॉडीज को बिया ब्लॉक करूची Then the Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Jamuna Action Plan to save from water pollution. ଯଦି ପାଣି ଆମର ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ଦେଖ 100% ୱାଟର ରୁ ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଭାଗ ପାଣି ଅଛି ଲାଇକ୍ 75% ପାଣି 70% ତ ପାଣି 30% ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା ତ 70% ପାଣିରୁ 97 ହେଇଗଲା କେବଳ ତମର ଓସେନ ୱାଟର तो पांचटा बड़ बड़ ओशन तमर रहिला जो इंडियन ओशन हे गला अटलांटिक अंटार्कटिका हे गला पैसिफिक ओशन हे गला ए जो पांचटा मेजर तम ओशन रहिला ये सब गले सेपटे देन ता सहित जो सी अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल ये समुद्र पानी हे गला कौन 97% आउ 3% रु 2% खाली ग्लेशियर रहि गला बर्फ आकार जमाई के अछि आउ जो 1% पानी अछि जो रिवर माने करे तो ताको भी हमें डिग्रेड कर देबा ताहले हम कल कोन आनिबा कोड पानी ना केमे चलबा जिंसटी तो हेतै गवर्नमेंट रो एटा एक्शन प्लान चली छी गंगा एक्शन प्लान जमुना एक्शन प्लान बट बाय दिस प्लेटफॉर्म मु ए डीएचएससी रो प्लेटफॉर्म को यूज करी तम माने एतिकी बेसिक जिंस जानिया को जे पिला माने वी आर स्टडीइंग इन 11 12th क्लास पढुछन देन वी आर एट द पीक एज ऑफ teenagers हिसाब रे आउ किछि वर्ष परे आउ इन अ मैटर ऑफ 1 or 2 वी आर गोइंग टू बी एडल्ट हम एडल्ट हबा को जाउची तम माने 18 प्लस हबा को जाउछ तो ए भितरे तमे सिविक सेंस आनो एज इंडियंस वी नीड मोर सिविक सेंस आगे पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करूचे वेदर इट इज अ बस और a ट्रेन और एनी वाटर बॉडीज हमको एटा रिस्पांसिबिलिटी नबा दरकार कि हम जहां भी कचरा फोपाडुचे सी आम जगह नुहे से जिनसटाକୁ ଆମେ ओन करूने दैट इज नॉट आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी हम तो किछि सेठी करिबा ये पब्लिक प्रॉपर्टी आ एटा सिविक सेंस तो करिया पड़िबो ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ न हबा गवर्नमेंट एमते बहुत इनिशिएटिव नबो गवर्नमेंट का काम करिबो बट वी एज अ सिटीजन वी एज द पर्सन एज अ पर्सन हमको एटा भाबिया पड़िबो कि हमको ये जिंस परिवारटा ठीक नहे बोली तो नेक्स्ट टाइम आगो तमर आसुची गणेश पूजा आसुची ए आज काल ठो तमर खुदुरकुणी ओसा स्टार्ट ही जाईची तो तमे माने जहां भी किछ कचरा बनौछ क्रिएट करूछ ट्राई करो कि आकु डिस्पोज करी न करिया पे डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज तापे किछ अलगा इनिशिएटिव नियो कि अलगा किछ वे ताको डिस्पोज करो ताको लैंडफिल हिसाब से पुती दियो कि जाली दियो कि जहां कर दियो बट डायरेक्टली नहीं केन वाटर बॉडीज फोपाडी कि तो नष्ट करो ना और ट्राई करो जिते कम मिनिमम कंजम्पशन करि परिबे हे परिबे इट इज पॉसिबल चलो so here we'll take some questions the previous question from NEET तमे देखि दो क्वेश्चन आंसर एंड क्वेश्चन देखि दियो मते आंसर टियो तमते चैट बॉक्स में दे परिबो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व्स गैस प्राइमरी ट्रीटमेंट सीवेज हमें कौन करछे तो now this platform is open for all the participants they can use this platform and answer the questions I am requesting all the dear participants to kindly raise their hand or they can answer directly in the chat box. The primary treatment of sewage treatment re कौन कौन involve है primary aeration, sedimentation of solid, BOD reduction, anaerobic digestion. मैं इतने सब पढ़ी ले. Now I'm waiting for your answer. Yes, the participants. Farhat Khan, Mita Naik, Padma Kishore Rauti, Government Higher Secondary Lapanga, Puspanjali, Rajalakshmi, Ramaji Higher Secondary School, Saishta Khanam, Shanti, Swati. I am requesting everybody kindly participate in solving this question answer. A directly question 2019, 2020. Yes, finally got our first answer. Swati Sahu is saying the first answer is option number B. Yes, correct. Equality. ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆନ୍ସର ଆମେ କରିପାରିବା ତ ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ଏଇ କ୍ଲାସ କରିକି NEET 2019 ର ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଦେଇପାରିଛେ ଆଉ ସେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ
से आंसर होची हमर सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड काहेकि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कथा कहउछे जब प्राइमरी ट्रीटमेंट कथा हमें कहबा तो प्राइमरी ट्रीटमेंट रे कहा कथा हमें बेसिकली कहउछे एठी प्राइमरी ट्रीटमेंट माने एठी किछि माइक्रोब्स यूज हेन तो एठी एडेशन कथा आसीबो नै एठी बियोड रिडक्शन कथा हबो नै एठी एनारोबिक डाइजेशन हबो द लास्ट स्टेज रासी गला राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 फ्लक्स इन सीवेज ट्रीटमेंट आर गैस से फ्लक्स रे को माने अछंती केमिकल प्रेसिपिटेट्स अछंती ना एरोबिक बैक्टीरियल एग्रीगेट्स माने अछंती ना फंगल हाइफीज आर देयर और प्रोटोजोअन कॉलोनीज आर देयर की अछंती देखो फर्स्ट केमिकल तो कदापि हबो नै कारण आमे एठी काहा से पचार फ्लक्स कथा पचार फ्लक्स को हम बायोफ्लक बोली कहछे तो बायोफ्लक रे केमिकल केबे भी हबो नै देन खाली फंगल हाइफी तो नाही खाली तो फंगस रहबो नै प्रोटोजोआ कथा भी एठी पड़ी नै प्रोटोजोअन भी हबो नै द करेक्ट आंसर इज एरोबिक बैक्टीरियल एग्रीगेट्स क्लियर द करेक्ट आंसर इज एरोबिक बैक्टीरियल एग्रीगेट्स yes Farad Khan right answer is aerobic bacterial aggregate. Now question number 2020 question asila 22 रे question asila which pair is correctly matched आदर कोटा correctly match होछि आ ए क्वेश्चन आंसर दवा पई तुम केवल 8 चैप्टर पढिले हबनी यू नीड टू नो द वेरी बेसिक्स फ्रॉम द 11th चैप्टर 11th रे जो तुम पढितिला बायोलॉजिकल क्लास सेटा देखिया पड़िबो एछोडा अछि क्लोस्ट्रिडियम कोन थरे टिटानस जो डिजीज है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी बनै थाए तो एटा तो भूल हो प्राइमरी क्लास डाइजेस्टर क्लोस्ट्रिडियम में किछि भी रोल नहीं तो ये हेगला रॉन्ग एस्चेरिचिया कोली फ्लॉक फॉर्मेशन करे नो एटा भी रॉन्ग नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट टू नाइट्रेट एटा भी रॉन्ग तो करेक्ट कोटा अछि जो मिथानोबैक्टीरियम माने रहिले ए माने बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करछ मिथानोबैक्टीरियम everybody is saying option B Farhat is saying option A but option B are correct Nupur Sadangi and Farhat Khan yes methanobacterium biogas production में help करछ good next four more questions then we'll take a short biological break you'll go and drink some water you'll go to washroom or attend a natural call and then we'll go for the next class. The primary sludge in sewage treatment is just quickly चारटा question answer मते कहिदियो then तापर आमे next part को entry करिया. Yes. The primary sludge in sewage treatment is gas. Primary sludge क्या सुना? Nupur and Swati are saying option C is correct. देखिबा yes primary sludge रे woman asile the grit and the debris removed. Yes, the correct answer is again Farhat is saying option C. Yes, option C is the correct answer. Very good. तमने क्लास करिछो अटेंड करिछो आंसर देइछो आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर आंसर्स एरोबिक बैक्टीरिया हबनी फ्लक्स हबनी एनारोबिक बैक्टीरिया भी हबनी तो प्राइमरी पडिछि प्राइमरी माने कहितले फिजिकल रिमूवल आ फिजिकल रे हमें कोन रिमूव करिछे ना फिजिकली हमें आकु ग्रीट और डेब्रिस को रिमूव करिछे नंबर 5 ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट रे बीओडी इज रिड्यूस्ड इन डैश बीओडी कोड रिड्यूस हबो primary treatment, secondary treatment. Answer is Nupur is saying answer is B. Yes, Nupur, correct answer is secondary treatment. I am a BOD reduce our starter. Very good. Yes, Farhat also saying the right answer. Congratulations. Answer is secondary treatment. BOD reduce our. Our BOD reduce hela mane polluting potential be reduce our. Yes. Saishta Khanam is also saying the right answer. Congratulations. You all three have given the right answer. Now question number 6. The flux formed in secondary sewage treatment. The secondary sewage treatment the flux of banichi. So flux re ki achi? Algae plus fungi achi ki? Is there any algae? No. It is anaerobic bacteria khali achi ki? No. Flux anaerobic bacteria nahi. Protozoans achandi ki? Nahi. The right answer is aerobic bacteria plus organic matter. ए माने मिसिकी अछंती. देखिबा करेक्ट आंसर की हमर देइछंती. स्वाति ऑप्शन सी हबनी
Flocks re ko rahibe. Option B is the correct answer. Sarishta Khanam, Farhat Khan. Yes. Santi is also given the right answer. Yes, and the correct answer is option number B. Now we'll go to the last question of this segment, and that is in sewage treatment. The methanogens are most active during gas. Methanogens methanogens are those bacteria which helps in methane production, CH4 production help करती है. Primary sedimentation, aeration tank operation, anaerobic sludge digestion, tertiary UV treatment. Option एटी कौन होगा, आंसर एटी कौन होगा? Let's quickly go to the last 7 question. Answer is yes, Swati. Swati correct answer दीजिए. से होची anaerobic sludge digestion. Yes, Farhat Khan, Nupur Sarangi, Farhat Khan and Swati Sahu, you three have given absolutely the correct answer, and you can see over your 2024 or NEET 2020 or NEET रे A type ର question आସୁଛି. Yes, right answer is option number C. Correct. Option C. So hereby you have completed your task. सब जो आंसर तो मैंने ठीक दीजिए, तो congratulations to all of you. And next part हमें quickly start कर दबा, and you will get this material from your nodal officer. You can kindly ask them सिखाते portal रे. And thank you for your kind attention. We will meet again after a short commercial. और छोटे ब्रेक पर हम समस्या मीट करिबा. Like today 9:05 ହେଲା 9:15 ने कम 9:15 हम जल्दी जल्दी क्लास करी जल्दी जल्दी बुझिबा. Yes, principal government higher secondary school of Panga also given the right answer. 7 option C थिला और 6 रे B थिला. Right answer ଦେଇଥିବାରୁ बहुत बहुत धन्यवाद. ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାଅ, ଆନ୍ସର ଜାଣୁଥାଅ, and it will really helpful to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ helpful ହେଇପାରିବ ଜିନିଷଟି. So hereby I am completing the first class, and here will take a short break of around 10 minutes, and again we'll come back to the class after 10 minutes. So thank you for your cooperation. Thank you for your participation.